Good evening, everyone. Welcome to Sakshi Knowledge Hub. So, as I have promised you all, we will be starting with the history class 12. So, let's study the first chapter that is themes in Indian history part 1. So, the first chapter is about bricks, beads and bones. So, I will be discussing the summary of this chapter, and as I have already qualified the STET exam, and right now again there will be notification for STET. So, we will be study for STET in English medium. So let's understand this. Firstly, have the chapter overview. This chapter deals with the Harappan civilization and importantly focuses on how archaeologists reconstruct history from material remains. Okay, so key sections and points, beginning and chronology. So, discovery. Harappa first excavated in 1921 by the Dayaram Sahni and Mohenjo-daro in 1922 by R.D. Banerjee. The Harappan civilization is further divided into three phases: the early Harappan, pre-Harappan, mature Harappan, and late Harappan. Cunningham, British archaeologist, had earlier surveyed the region but linked find mistaking to later periods. सो इस चैप्टर में पहले हमें पढ़ना है कि हड़प्पा के बारे में। सबसे पहले एक्सकवेशन किसने किया? सो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पन का एक्सकवेशन किया और 1922 में आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो का एक्सकवेशन किया। तो आप बता सकते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? Okay, so please comment below in the comment section that Harappa is situated on which river, and also tell about Mohenjo-daro, that is into which river, situated on which river bank. Okay, so now the second part of this chapter talks about subsistence strategies. Diet: wheat, barley, pulses, sesame, linseed, mustard, animal bones, cattle, sheep, goat, buffalo, pig suggest domestication, whereas agriculture probably used wooden plows, terracotta plow models found at Cholistan and Banavali. और वहाँ पे हमें इरिगेशन के लिए भी कुछ कुछ मिला है एविडेंस, जैसे कैनाल एविडेंस एज सौटुगई अफगानिस्तान, वाटर रिजर्वॉयर्स एट धोलावीरा। सो अब हम जानेंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको आ सकता है कि धोलावीरा में क्या मिला है, ठीक है। व्हाट यू हैव फाउंड इन धोलावीरा? तो धोलावीरा में एक वाटर रिजर्वॉयर मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा। ये एक डिटेल्स आपको बुक तो स्टडी करनी होगी, उसमें आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या मिला है। अब हम जानते हैं मैच्योर हड़प्पा के बारे में, अर्बन सेंटर्स उनके जो हुआ करते थे। Craft production. Chanudaro was a specialized craft production center: bead making, seal carving, weight making, metal working. और रॉ मटेरियल्स क्या यूज करते थे वो लोग? ऑप्टेन वाया लॉन्ग डिस्टेंस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम राजस्थान गुजरात। राजस्थान गुजरात से क्या लाते थे वो लोग? कॉपर। साउथ इंडिया से क्या लाते थे? गोल्ड। अफगानिस्तान और ईरान से सिल्वर और टिन। पर्शियन गल्फ, मिडिल ईस्ट से वो लोग कार्नेलियन और लैपिस लजुली नाम के पत्थर लाते थे वो लोग। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स स्टडी अबाउट मोहनजोदाड़ो लेआउट। लेआउट कैसा था मोहनजोदाड़ो का? मोहनजोदाड़ो वाज द सेकंड प्लेस टू बी एक्सकवेटेड आफ्टर हड़प्पा, और वहाँ के जो सिटाडल थे वो काफी रेज्ड थे, वॉल्ड थे। पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक द ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रैनरी वर आल्सो देयर। और वहाँ पे टाउन जो था वो दो पार्ट में था, लोअर टाउन एंड अपर टाउन। सो लोअर टाउन में क्या था? लोअर टाउन वॉल्ड थे, लेड आउट ऑन अ ग्रिड एंड ब्रिक हाउसेस। आर यू गेटिंग इट?
ओके। और मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेट बाथ भी मिला था। वाटर वाटर टाइट ब्रिक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स लाइकली यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग। जैसे कि अभी आप लोग हम लोग नदी नालों तालाब पोखरों में जैसे कि कोई भी रिचुअल बाथिंग होता है किसी भी फेस्टिवल में जब क्राउड एक साथ रिचुअल बात करते हैं, उस टाइम में भी हमें एक एविडेंस मिला है, जो कि मिला है हमें ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो से। सो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉम वेयर द ग्रेट बाथ हैव बीन फाउंड। सो इट इज फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में क्या क्या मिला है हमें? Houses built around courtyards, emphasis on privacy. No windows on ground level, walls facing streets. Most have wells and bathing areas, and drainage system, a hallmark of Harappan urban planning. ठीक है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम इतने अच्छे थे कि हमारे मॉडर्न टाइम से भी अच्छे थे। अभी तो हमारे बहुत सारे रोड्स में है कि नदी नाले रहते हैं, हम क्लियरली जा भी नहीं पाते हैं कि कहाँ से जाना है, लेकिन उस टाइम के जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो काफी अपराइट थे। और ऑल्सो वहाँ के जो रोड्स थे वो ना एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट किया करते थे। ओके। ब्यूरियल्स। Harappan generally buried the dead with pottery, ornaments, graves at cemeteries in Harappa. Variation across sites, no single typical burial was found. And also, tra- tracking social differences. Artifacts classified at utilitarian. Everybody used terracotta, stone versus luxuries, rare, costly material, or far from a fiend school. लाइक जिसका जो भी लिविंग स्टैंडर्ड था उसके हिसाब से वो लोग हम हमें मिलता है वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस कि किसके साथ क्या क्या हम उनके साथ दफनाते थे। Like evidence of social stratification debated burials don't show extreme differences, but craft materials distribution suggests hierarchy. और ये हायरार्की के बारे में हमें बताते थे कि क्या हायरार्की रही होगी उस टाइम पे अगर ऐसे लोग वहां पे मिले हैं तो। सील्स एंड स्क्रिप्ट एंड वेट्स। सो इससे क्या पता चलता है हमें कि कौन कौन से सील्स वहां मिले हुए हैं? So seals made of steatite used to identify property goods often carry animal motifs. Animal motifs like you must have seen the unicorn. Have you seen the unicorn? The one with one horn on the mm, head, that is unicorn. So unicorn motif का वहाँ पे मिला है हमें। और हड़प्पन स्क्रिप्ट भी मिला है जो कि अभी तक डिसिफर नहीं हो पाया कि क्या लिखा है। और जो स्क्रिप्ट था वो पिक्टोग्राफिक था, नॉट अल्फाबेटिक, स्टिल अनडिसिफर्ड। और अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं उस स्क्रिप्ट को, वो कौन से लैंग्वेज में लिखा है। और मेनली उसे बोस्टोफ्रेडन बोलते हैं, रिटन इन बोस्टोफ्रेडन, राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट। और वेट क्या है वहां पे? वेट क्यूबिकल मेड ऑफ चर्च जनरली इन बाइनरी सिस्टम यूज फॉर ट्रेड रेगुलेशन। बाइनरी सिस्टम लाइक 2, 4, 6, 8, इस तरीके से मिला। Ancient authority or political organization. No clear evidence of kings, temples, or palaces debated whether it was a single state or multiple. Uniformity in artifacts. Seals, weight, bricks with standard ratio of 1 is to 2 is to 4. हमारे हमें ऐसा ब्रिक मिला है जो कि रेशियो में है 1 is to 2 is to 4। अगर इसकी लंबाई 4 है, अगर ये 4 है, ये 2 है, तो ये 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब हम जानेंगे कि डिक्लाइन कैसे हुआ। अराउंड 1900 BC डिक्लाइंस ऑफ सिटीज डी अर्बनाइजेशन। या तो वहां पर डी अर्बनाइजेशन हो गया या तो क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए, लाइक ड्राइंग ऑफ रिवर घग्गर हाकरा, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, फ्लड्स, डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, आयरन इन्वेजन थ्योरी नाउ लार्जली डिस्क्रेडिटेड। अब हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी को अब ज्यादा सोचते नहीं है कि वही हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। मेनली द कॉज इज फ्लड। लेट हड़प्पन फेज shows rural spread with declining urban features. Okay, so discovering the Harappan civilization historiography, early archaeologists like
Cunningham missed the civilization's age. John Marshall, Director General of ASI, Archaeological Survey of India, introduced stratigraphy method, but it criticized for not maintaining strict layer-wise recording. Mortimer Wheeler improved excavation techniques, recording finds horizontally in three dimensions based on stratigraphy. Problems of interception, perishable materials lost, difficulty identifying sacred ritual objects without text, script, undeciphered limits understandings. So these were some of the historiography means historians ने क्या क्या बोला है उस टाइम पे, तो ये हिस्टोग्राफी से रिलेटेड सम टर्म्स है। एस्टेट में हिस्टोरियोग्राफी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एग्जाम फोकस्ड फाइंड, और जो हम हमें आगे भी ध्यान देना है वो है डेट्स एंड साइट एक्सकावेटर पेयर्स, लाइक हड़प्पा को दयाराम साहनी ने एक्सकावेट किया, मोहनजोदाड़ो को आर डी बैनर्जी ने, तनुदारो को अर्नेस्ट मैके ने, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, बाकी जो भी जितने भी यहाँ पे जो हमें मिले हैं उसे किसने एक्सकावेट किया है, वो पेयर काफी पूछे जाते हैं। तो आपको तो बुक एक बार रीडिंग करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप समरी भी देख लो, ये कुछ कुछ हेल्प हो जाएंगे आपके। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदाड़ो में मिला है, डॉकयार्ड लोथल में मिला है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम धोलावीरा में मिला है, स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड, ये काफी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यू है, और वो स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, बर्स्ट ऑफ रीडिंग, ये भी काफी बार क्वेश्चन में आया हुआ है। ओके ओके, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। ओके, सो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। So first question is, who excavated Harappa in 1921? So it's Dayaram Sahni. Dayaram Sahni excavated Harappa in 1921, marking the first discovery of civilization. R.D. Banerjee excavated Mohenjo-daro a year later in 1922. The site excavator pairing is very common MCQ in state exam. ये काफी common questions है। किसने किसको इन्वेंट किया, आपको एक मैच दी फॉलोइंग में भी आ सकता है, आपको ये किसी भी चीज में वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इज व्हिच साइट इज फेमस फॉर डिस्कवरी ऑफ अ डॉकयार्ड। सो डॉकयार्ड कहाँ मिला है हमें, लोथल में मिला है। Lothal is in Gujarat, is well known for its dockyard, indicating its role in maritime trade. This is one of the most frequently asked questions. ठीक है, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। The Great Bath, a ritual key structure was found at which site? So Great Bath कहाँ मिला है हमें, अभी मैंने डिस्कस किया था, मोहनजोदाड़ो में मिला है। Okay, now the fourth question. Which site is particularly noted as a specialized center for craft production such as bead making and steel carving? तो इसका आंसर होगा चन्नूदारो. Channudaro was a specialized center of craft production. Okay, now the next question. Harappan seals were typically made of which material? That is steatite. Harappan seals were generally made of steatite, a soft stone and often depicted animal motifs, the unicorn being the most common. Along with Harappan script, they likely served to identify ownership of goods. Okay, ये सब आप लोग याद कर लेना क्योंकि पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। The Harappan script is best described as, हमने अभी डिस्कस किया था, किस चीज में डिस्क्राइब करेंगे, पिक्टोग्राफिक एंड अनडेसिफर्ड. ओके, which site is known for evidence of sophisticated water harvesting and storage system reservoirs? That is Dholavira. Dholavira is a unique for its elaborate water harvesting system with large reservoirs reflecting adaptation to a relatively arid environment. Okay, now the next question. Harappan weights were generally made of which material and followed what system? That is chert. और बाइनरी सिस्टम फॉलो होता था वहाँ पे, लाइक 1 2 4 8 16 32, ये मल्टीप्लिकेशन में होते हैं. ओके, who introduced improved excavation technique of recording finds horizontally based on script stratigraphy? That is
मॉर्टिमर मॉर्टिमर व्हीलर, जो कि थर्ड पर्सन थे ये डिस्कस करने वाले. Mortimer Wheeler improved on John Marshall's excavation method by introducing the principle of recording finds according to strata layers, layer by layer उन्होंने सर्च किया था, and horizontal context, giving much more reliable chronological data. Marshall is often criticized in the NCERT text for excavating fixed horizontal units without adequate attention. Okay. Now the next question is the standard brick ratio used across Harappan sites was, अभी हमने discuss किया था, that is 1, 2 and 4. Option B is the correct answer. Harappan brick followed a uniform ratio of 1 is to 2 is to 4 thickness, width and length across widely separated sites, which is cited as evidence of some form of shared standards or centralized controlled planning across the civilization. So, approximately what time period is designated as the mature Harappan phase? So, the correct answer is 2600 to 1900 BC. The mature Harappan phase associated with the classic urban Harappan civilization, planned cities, seals, script, approximately from 2600 to 1900 BC. Okay, please keep remember this. Now the next. Which of the following is not considered a likely reason for the decline of Harappan cities around 1900 BC? That is iron invasion. As per the current historiography, iron invasion is not considered a reason for the decline of the Harappan civilization. So I hope I'm clear to you all and you are finding this class interesting. So let me know what else you want to study from me. This was just a short summary of the chapter which I have elaborated here. And the most important thing that you have to do is you have to study the book also, and later on you have to revise it with me. Okay. I will give you more questions if you all are interested. So keep learning on Sakshi Knowledge Hub. Thank you.